Now we know that Hamlet is a kind of revenge tragedy because we see that the whole tragedy is involved, is centered, is focused around revenge of Hamlet. He wants to avenge the father of his death, King Hamlet, from his uncle Claudius. So this type of tragedy it is known as the revenge tragedy. ठीक है. और revenge tragedy जो है it has been very popular in the Shakespearean time. This revenge tragedy it was inspired by the Roman dramatist Seneca. Seneca के हवाले से you already know that he was the main inspiration for tragedy writing of for the writers of Elizabethan age, be it Christopher Marlowe or be it Shakespeare. ठीक है, both of them they took inspiration from Seneca. Seneca has written 10 comedy tragedies, and all the tragedies they are filled with violence and bloodshed. Okay, अब हैमलेट की जो प्रीडिसेसर्स हैं, जो कि हैमलेट से पहले रिवेंज ट्रेजेडीज आई उसमें टॉमस किड का प्ले है द स्पेनिश ट्रेजेडी के नाम से. टॉमस किड जो है ही वाज a member of university. It's although he was not a university educated individual, keep this in mind. इसमें भी क्वेश्चन आपके competitive एग्जाम में आ सकता है कि which university Witt was not actually a university educated fellow. So Thomas Kidd was the individual who was not educated in a university. However, he was part of the group that we call university wits. So he wrote this play Spanish tragedy which followed the Senecan model of revenge tragedy, and that play it was very popular. ठीक है. After that the play of Christopher Marlowe Jew of Malta it is also a revenge tragedy. Jew of Malta के अंदर जो लीडिंग करेक्टर है ही इज अ ज्यू नेम्ड बाराबास. बाराबास जो है बेसिकली उस दौर में जो ज्यूज थे दे हैड नो एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी. माशरा उनको कबूल नहीं करता था. दे वर लुक डाउन अपॉन. और इसके अलावा ज्यूज जो थे वो रिच होते थे, वो लोगों को पैसा लेंड करते थे, उधार देते थे और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते थे. यूजरी कहते हैं, और यूजरी जो है वो उसको अच्छा नहीं समझा जाता. सो ही डिसाइड्स दैट ही इज गोइंग टू टेक रिवेंज अपॉन द सोसाइटी. सो ही उसका एक सर्वेंट है इथामोर, उसके साथ मिल के ही वो ये फैसला करता है कि वो मुख्तलिफ लोगों से रिवेंज लेगा. उस रिवेंज के चक्कर में वो दो मॉन्क्स को कत्ल करता है. फिर वो और भी मतलब के काफ़ी लोग हैं जो कि इसके विक्टिम बनते हैं. इवन उसका सर्वेंट जो इथामोर है वो और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो दोनों भी बाराबास के रिवेंज का जो है वो हिस्सा बनते हैं. इवन उसकी अपनी डॉटर जो है उसको बाराबास यूज करता है टू टेक रिवेंज फ्रॉम द क्रिश्चियंस. अल्टीमेटली लूजेस हिज डॉटर टू क्रिश्चियनिटी जब वो रियलाइज करती है कि उसका बाप जो है वो एक्सट्रीमली इवल किस्म का शख्स है. सो व्हाट ही डज इज कि ही आल्सो डिसाइड्स टू किल हिज डॉटर, एंड ही kills not only his own daughter but all the nuns that are there in that nunnery. बाराबास की डॉटर का नाम एबिगेल होता है. तो एबिगेल जो है चूंकि उसका फादर जो है वो एबिगेल के लव को यूज करता है और वो दो क्रिश्चियन लड़कों को मर्डर करता है. जब एबिगेल को रियलाइज होता है कि उसका लवर जो है वो भी उसके फादर के रिवेंज का हिस्सा बन गया. सो शी टर्न्स इनटू अ क्रिश्चियन वुमन एंड शी जॉइन्स अ ननरी. तो बाराबास अब रिवेंज लेता है एबिगेल से पॉइजनड राइस के ज़रिए. वो पूरी ननरी जितनी भी नन्स होती हैं उनको पॉइजनड राइस सर्व करता है. वो ज़ाहिर है उसमें एबिगेल की भी डेथ होती है लेकिन उसके साथ बाकी नन्स जो हैं उनकी भी डेथ हो जाती है. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी. और ये रिवेंज ट्रेजिडीज जो थी before Shakespeare they had been popular. So Shakespeare also decided that he is also going to experiment with the revenge tragedy. So he came up with Hamlet, and Hamlet, it proved to be the most famous revenge tragedy written in the Elizabethan age.
Now, let us look at what are the ingredients of a revenge tragedy, or what are the things that you need in order to make a revenge tragedy. So, first of all, what you need is you need a melancholy hero or an avenger. By melancholy, we need सैड नेचर्ड इंडिविजुअल, एक ऐसा शख्स जो कि उदास किस्म की पर्सनैलिटी, जैसे हैमलेट है, आप उसको देखें तो सैडनेस जो है उसके इर्द गिर्द घूमती है, उदास दिखाई देता है। तो एक इस टाइप का आपको हीरो चाहिए होता है, एंड दैट हीरो ही शुड बी अ हेजिटेटिंग एवेंजर, ठीक, हेजिटेशन होनी चाहिए। अब आप देखें कि उस हैमलेट के फादर का गोस्ट उसको इन्फॉर्म करता है कि मुझे मर्डर किया गया है, लेकिन हैमलेट जो है ही डजंट डिसाइड कि आई एम गोइंग टू टेक रिवेंज राइट नाउ, रादर ही हेजिटेट्स एंड ही डिसाइड्स कि मैं पहले कंफर्म करूंगा, मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, दोबारा अगेन ही डिसाइड्स कि मैं आई एम गोइंग टू कंफर्म इट वंस मोर बाय अरेंजिंग द प्ले। और जब प्ले से भी कंफर्म हो जाता है, फिर वो उसको मारने जाता है तो वो देखता है कि वो तो इबादत कर रहा है, तो इबादत में मारूंगा तो ये आखिर में बख्शा जाएगा। अगेन ही हेजिटेट्स एंड ही डज नॉट किल। तो हेजिटेशन जो है इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ द रिवेंज tragedy, a very compulsory ingredient of the revenge tragedy. Then we need a villain who is to be killed in the revenge. तो villain आपके पास क्लॉडियस की फॉर्म में प्ले के अंदर मौजूद है। फिर यू नीड अ कम्प्लेक्स प्लॉट, तो ऑब्वियसली हैमलेट का प्लॉट जो है वो कम्प्लेक्स प्लॉट है। इसमें फोर्टिन ब्रास की भी स्टोरी है, इसमें लियर्टीज और पोलोनियस उसकी डेथ, उसके रिवेंज की भी स्टोरी है। फिर देर इज स्टोरी ऑफ लव अफेयर बिटवीन हैमलेट एंड ओफिलिया, देन देर इज स्टोरी ऑफ द डेथ ऑफ द फादर, एंड देन देर इज स्टोरी ऑफ रिवेंज ऑफ हैमलेट, ठीक है, जो कि मेन स्टोरी है। तो कम्प्लेक्स किस्म का प्लॉट है हैमलेट का, जो कि रिवेंज ट्रेजिडी की रवायात पे पूरा उतरता है। इसके अलावा जो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं रिवेंज ट्रेजिडी के हवाले से, जो उसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर मर्डर्स, ठीक है, या फिर बाकी फिजिकल हॉरर्स हैं। तो मर्डर आपको पता है कि किंग हैमलेट का मर्डर है, देन पोलोनियस का मर्डर है, फिर ओफिलिया की डेथ है। तो ये सारी चीज़ें, मैडनेस जो है वो ओफिलिया की मैडनेस मौजूद है आपके पास। फिर आखिर में आपको पता है कि चार पांच मर्डर्स अलग से होते हैं। So all these ingredients they are there in the Hamlet. Then there is a play within a play. So play within a play जो है वो हैमलेट के अंदर आपको मर्डर ऑफ गोंजागो, ठीक है। तो ये प्ले विद इन अ प्ले है जिसको हैमलेट अरेंज करता है ताकि वो इस चीज़ को डिटरमिन कर सके कि आया उसका चचा जो है वो हकीकत में यू नो गिल्टी है या नहीं है। फिर सेक्सुअल ऑब्सेशन या फिर लस्ट रिलेटेड टू पैशन फॉर रिवेंज। तो सेक्सुअल ऑब्सेशन में आप ये कह सकते हैं कि हैमलेट का जो उसकी माँ पे इल्ज़ाम लगाना है कि यू हैव मैरिड माय अंकल फॉर लस्ट, एंड तुम्हारी जो शादी है इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द क्रिश्चियन लॉज। तो हैमलेट जो है वो ऑब्सेस्ड है कि उसकी माँ ने क्यों शादी की। तो ये सॉर्ट ऑफ चीज़ यहाँ पे कवर होती है। फिर देयर इज द घोस्ट हु कॉल्स फॉर रिवेंज। तो प्ले के आगाज में ही किंग हैमलेट का घोस्ट जो है इट अपीयर्स ऑन द सीन, and then again it appears on the scene and it asks Hamlet to avenge his death, because it was not a natural death, rather he was murdered, and he was murdered by Uncle Claudius by pouring poison into his ear when he was sleeping. Then the next ingredient of the revenge tragedy is real or feigned madness, यानी कि real और pretended madness आप कह लें। तो हेमलेट जो है obviously he goes mad. However, his madness is not real, rather, his madness is pretended madness. And then there is madness of Ophelia, that is real madness. ठीक है। फिर रिवेंज ट्रेजिडी के अंदर द डेथ ऑफ एवेंजर, यानी कि वो शख्स जो कि बदला लेता है उसकी अपनी मौत हो जाती है। सो हैमलेट he dies at the end of the play. So all the ingredients mentioned here, they are completely covered in the play Hamlet. Next, let us have a look at the structure of a revenge tragedy, कि एक revenge tragedy जो होती है उसका structure क्या होता है, यानी कि उसकी
پلاٹ کو کس طریقے سے آرگنائز کیا جاتا ہے. سو ریونج ٹریجڈی جو ہے اٹس structured like this. It has an exposition, it has an anticipation, it has a confrontation, it has a delay. delay جو ہے یہ سارے confrontation کے ساتھ associated ہے, and then after the delay there is completion of the task. اور task کیا ہوتا ہے؟ Obviously when we are talking about revenge tragedy, so the task here is revenge which is completed after the delay. تو ایکسپوزیشن کی بات کرتے ہیں. ایکسپوزیشن از دا بگننگ آف دا پلے. ان دیٹ ایکسپوزیشن وی آر provided with the background information, اور usually یہ جو background information ہے it is provided by a ghost, and this background information it provides motivation for the revenge. So if you look at Hamlet, then ہمیں پتہ ہے کہ ساری background information جو ہے کنگ ہیملٹ کے murder کی it is provided by the گوسٹ آف کنگ ہیملیٹ. اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے جب پتہ چل گیا کہ کنگ ہیملیٹ کی ڈیتھ جو تھی اٹ واز ناٹ اے نیچرل ڈیتھ, رادر اٹ واز مرڈر. سو اٹ پرووائڈز ینگ ہیملیٹ ود دا موٹیویشن فار ریونج کہ میں اب جو ہے وہ ریونج لوں گا اپنے فادر کی ڈیتھ کا. اس کے بعد دیر از اینٹیسپیشن. اینٹیسپیشن از اے فیز ویئر دا ایونجر, یعنی کہ وہ شخص جو کہ بدلہ لینا چاہ رہا ہے وہ پلان کرتا ہے اپنے ریونج کو کہ میں کس طریقے سے ریونج جو ہے اس کو کمپلیٹ کروں گا. اچھا پھر ریونج پلاٹ جو ہے وہ کمپلیکس قسم کا پلاٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جو ریونج جس انداز سے وہ اینٹیسپیٹ کرتا ہے وہ انتہائی کمپلیکس ہے. اور پلاٹ کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ ریڈرز کے اندر ٹینشن اور ایک اینٹیسپیشن کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. اب ظاہر ہے ہیملیٹ کے پاس موقع آتا ہے ریونج لینے کا, وہ لیکن وہ ریونج لے نہیں پاتا بیکاز آف ہز ریلیجیس بلیفس کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو سفر ان ہیل, رادر ہی ول go to heavens if I murder him in the current state. تو پھر ظاہر ہے وہ پلاننگ کرتا رہتا ہے, پلاننگ کرتا رہتا ہے, ایسے کروں گا ایسے کروں گا, اپنے آپ کو کہ کوستا رہتا ہے. سو دیر از a lot of anticipation and a lot of detailed planning. اس کے بعد کنفرنٹریشن ہے. کنفرنٹریشن وہ کہ جب پلے کے ذریعے ریویل ہو جاتا ہے کہ کلاڈیس نے کنگ ہیملٹ کا مرڈر کیا ہے. اب آبویسلی پلے کے بعد جو اس کا اٹھ کے جانا ہے تو اس سے ریویل ہو گیا, مطلب کہ یہاں سے کنفرنٹریشن کا آغاز ہوتا ہے. ناؤ کلاڈیس نوز کہ ہیملٹ کو پتہ ہے کہ آئی ہیو مرڈرڈ, اینڈ ہی آلسو نوز دیٹ ہیملٹ از پلاننگ ریونج. سو کنفرنٹریشن جو ہے وہ آبویسلی کلاڈیس اور ہیملٹ کے بیچ میں ہے, اینڈ ایز ریزلٹ آف دیٹ confrontation Claudius he decides that he's going to send Hamlet to England, and obviously Hamlet is also bent on taking his revenge, and then he when he gets the chance he you know gets off that ship and he returns back to Denmark in order to confront Claudius so that he can avenge the death of his father. اچھا پھر ریونج ٹریجڈی کا اہم حصہ ہے ڈیلے. ڈیلے تو obviously آپ کو پتا ہے کہ پورے پلے کے اندر ہیملیٹ he keeps on delaying, he keeps on delaying, he misses the chances to avenge his death, the death of the father until he is 100% sure. Then when he is sure again he delays. ڈیلے جو ہے اور جو ہیزیٹیشن ہے اس سے پلے کا ٹیمپو سلو ہوتا ہے تھوڑا سا, اور جو ٹینشن ہے جو ایموشنز ہیں ان دا مائنڈز آف دا ریڈرز اینڈ ان دا مائنڈ آف دی آڈینس آف دی تھیٹر, وہ ایموشنز جو ہیں وہ کافی پیک کر جاتے ہیں, کافی ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں. فائنلی دیر از کمپلیشن, یعنی کہ جو پلان ہوتا ہے ایونجر کا, یعنی کہ یہاں پہ جو ہیملٹ ہے وہ obviously is avenging the death of his father, that plan is completed and it is carried out. revenge جو ہے وہ complete ہوتا ہے, لیکن during the process of the revenge or at the end of the revenge جو Avenger ہے he himself is also killed, like we see Hamlet dying at the end of the play. ہیملٹ کے اندر آپ کو تین جو میجر ریونج پلاٹس ہیں وہ ملتے ہیں. مین پلاٹ ہے نمبر 1 پہ ہیملٹ کا, ویئر ہیملٹ از
trying to avenge the death of his father, King Hamlet. Secondly, there is plot of Laertes, where Laertes is trying to avenge the death of his father, Polonius. Then there's a plot of revenge of Fortinbras, where Fortinbras is trying to avenge the defeat of his father at the hands of King Hamlet, or late King Hamlet, as we can call him. So overall, we can find the theme of revenge, prevailing in almost all the plots of the story. So it is a revenge tragedy, keeping in view all the circumstances that we have seen. Furthermore, the concept of revenge in that time period, it was like that. Francis Bacon, who was contemporary of William Shakespeare, he says that revenge is a kind of wild justice. So, avenging the death of someone or taking revenge was viewed as wild sort of justice, not decent justice, but wild kind of justice. So, these are all the elements of revenge tragedy that we have discussed so far, and I hope that you have understood them. So, thank you so much for listening. Take care. Allah Hafiz.